है ना, अगर आप वाईफाई से डाटा ले लें तो फिर आप सिम बंद कर देंगे. Now, differences between a sale and agreement to sell. अब क्योंकि वो शायद आप यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं अब रीड आउट कर देता हूँ और वो डिस्कशन साथ ही कर लेंगे. ओनरशिप इन सेल टू ऊपर होती है. कल्चर को तो टेक्नोलॉजी चल पड़ा है. अगर जरूरी नहीं है तो अब अगर रुकता है तो इसको रुकने दो. ठीक है ना. वेयर वर वी? मेरा हाँ. So the second thing is agreement of जी बेटा ग्रुप बना के सर ये पीडीएफ को ग्रुप में डाल दें, सारे अपने अपने मोबाइल पे देखेंगे. वो नो इशू. ये वो जो है वो जो स्लाइड्स हैं वो मैं आप कोई नंबर दे दीजिएगा, मैं उसको ये तलाल को मैं भेज दूंगा. ये आपको शेयर कर लेगा. अगर इस मौलवी पे आपको एतबार है ठीक है ना, उसको छोड़े. वो बाकी या मैं ये छोड़ जाऊंगा यहाँ पे, ये आप देख लीजिएगा. Sale is an executed contract. बेटा देखें, इफ यू हैव समथिंग एल्स टू डू, क्योंकि आप बिल्कुल सामने हैं मेरे, और अगर आप आपस में बात करेंगे और हंसते रहेंगे तो आप बाहर जा सकते हैं और लतीफा सुन के वापस आ सकते हैं. तो सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. मतलब इसको मैं स्पीड से कर लेता हूं क्योंकि ये सब आपने पढ़ा होगा. इट्स ओनली फॉर द रिमाइंडिंग. तो एन एग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. In sale, the risk of loss is with the buyer, whereas in the agreement to sell, it is with the seller. In agreement of sale, the seller cannot resell it, whereas in agreement to sell, the seller can sell it to someone else. Yes, of course, under certain conditions. Sale is for existing and certain goods, whereas agreement to sell can be for the future goods. Yes, please. Sir, in relation to agreement to sell, where the last requirement for future and unascertained goods, isn't it a requirement of a valid contract that you have to have certainty of subject matter? Like if the goods are like unascertained goods, then you don't have certainty of subject matter. That's why that is agreement to sell. No, I understand that, but I'm asking, how could you have a contract to sell something where there's no certainty of subject matter to which the agreement is? But that is subject to certain conditions. It can be a future or forward contract. Yeah. It's for the future goods. सर एग्रीमेंट If today I enter into with the Nokia, for example, सामने मोबाइल नजर आया तो मुझे याद आ गया, that I will purchase certain number of phones from the Nokia, which Nokia is going to produce in the next 1 year. So those are the future goods. सर एग्रीमेंट टू सेल में कुछ कंसिडरेशन दे सकते हैं सर? आपकी मर्जी. ठीक है. Normally, why would one agree to produce for you and without any consideration or something in advance, that tomorrow you say you don't have money and you don't want to buy, so you can. That is between, that is a thing which is going to be between parties, what you are going to agree on the considerations. You can agree on a part advance and a part at the time of delivery. Sometimes you agree that even after delivery you take a time and go. But the commercial considerations
when we will be coming to the drafting situation, over there we will be discussing it, that what are the conditions and under what circumstances you can negotiate. That comes under the negotiations. आपने क्या टाइम negotiate करनी है, किस हद तक करनी है, प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या होगा, आप सारा एडवांस देना चाहेंगे, आप पार्ट एडवांस देना चाहेंगे, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होगा, इन कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स. यस Sir, agreement to sell, can we call this an exception? क्योंकि इनकी जो बात है वो I think it's true to some extent कि contract आप इस तरह उन goods के लिए नहीं कर सकते जो आपके पास नहीं है at the present time. आप conditional contract नहीं कर सकते कि ये मेरे पास आएंगी तो फिर मैं contract करूँगा. तो agreement to sell तो future के लिए है. Yes. So that's an exception. And I am agreement to sell is in a layman's language that I am agreeing to sell to you a thing. Maybe I have today with me, yeah. but I am requiring you to fulfill certain conditions, and then I will transfer the rights to you, or I will produce, or I will have that thing with me in future, and I am now agreeing with you to sell. No contract later. Yes. The contract is. Contract will be executed later on. Now, others, I think, in case of breach of contract, the seller can sue for the price of the goods. But in the case of breach of contract, the seller can sue only for damages, not for the price. समझ नहीं आ रही? समझ नहीं आया सर. वो अपने ध्यान में दौर के लिए यहाँ थोड़ी मेरे से ये गलती हुई है कि मुझे ऊपर दोबारा वो हेडिंग सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल रखना चाहिए था. As we have already said that we are talking about two different scenarios. One is sale and other is agreement to sell. In a situation of sale, the seller has a right only of what? He can sue for recovery of the price. Seller. उसकी रेमेडी यही है, उसने चीज बेच दी है, वो आपसे अगर आप नहीं दे रहे तो he can sue for the price. Whereas in the case of agreement to sell, he can ask for damages and not for the price. वो जो पहले बात हुई थी, मैंने प्रोड्यूस कर दी चीज और मैंने कहा out of all other excuses, I come up with excuse, I don't have money to pay at this moment of time. मुझे उम्मीद थी मेरे पास पैसे आएंगे, अब नहीं आए. But the seller will say that I have produced it for you. So in that case, what the seller will do, he can sue for the damages. And there's a logic behind it. In that situation, he has the goods with him. Yeah. He can sell it to someone else. Maybe not now. Yeah. Maybe with some loss. But for that, he has a right that he can sue. सर मोस्टली ये होता है कि एग्रीमेंट टू सेल ओरली भी होता है सर, मतलब कोई चीज ना, मतलब लिखत पढ़त होती नहीं है सर, ये मैंने दे दी ले ली, वो भी वाइड है सर. वो तो जगह ना नहीं, वाइड नहीं है. ये तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा. देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट विच आर वाइड, उसमें ओरल की क्लॉज कहीं पे भी नहीं है दैट एन ओरल एग्रीमेंट इज वाइड. बट फ्रॉम द प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव अ ओरल एग्रीमेंट and in the circumstances where it is between two individuals and there is no witness available to you. ये विटनेस अगर हो सर तो Then that can be proved. If you can prove it, you can enforce it. सर फिर ये कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस हुआ सर? अगर कंडीशन अप्लाई करेंगे कि मेरे पास पैसे होंगे तो मैं खरीद लूंगा, ये तो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में होता है ना सर? कंटीजेंट में और भी बहुत सी कंटीजेंसीज हो सकती हैं ना. फॉर एग्जांपल मैं जो है वो कि अगर मुझे मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि आपसे मैं कंबल खरीद लूंगा
नहीं सर्दी तो बेटा आएगी आएगी उससे तो तुम नहीं बच सकते और इस्लामाबाद में तो आएगी आएगी तो लेकिन आई एम ऑलरेडी नेगोशिएटिंग a contract with an hospital जहां मैंने सप्लाई करना है and if I will get that I will buy it from you. अब ये कंटीजेंसी हो गई है और वो दवाइयों के मामले में ज्यादा होती है पेस्टिसाइड्स हैं Excuse me, sir. You said that in sale, the seller cannot resell the goods, right? But why is that? Can't you always resell something you have legal ownership of? Resell तो हमेशा हो सकती है चीजें. Agreement to sell. आपने बेटा ऑलरेडी भेज दी है आपके पास राय कुछ नहीं है तो आप क्या बेचेंगे Oh, अच्छा. After the sale has completed, Yes. you can sell. Okay, fine. Thank you. मैं आपकी तरफ So देख रहा just sorry. So just going off of that, could I agree to sell a property that I'm not the legal owner of? For example, can I agree to say that I will buy this piece of land, I will acquire the rights to this piece of land in say December, and then in January I agree to sell it to you. so that will be agreement to sell. Yeah, no. So my question is, can I agree to sell something that I do not have the legal right to sell? At that I'm moment. not the legal owner of that. That'll be contingent. That is a she has replied to you, that is a contingent contract that I will sell. Yeah. When that I will have the ownership or right in that property. So then, could I go back and say, well, I didn't have the money, I didn't buy the property, so now our contract is void. Like this. Yes, Yeah. you can. But then buyer might have certain rights. Yes. What are those rights? He can sue you for damages. Okay. He can't force you because you don't have. So But then it's a breach. Even if we have agreed that Yes. I will sell it to you only in the condition that I become the legal owner. yes. So in this situation, But there's also this other- but in an agreement, if you have clarified it Yeah. that if you will not have the ownership, you will not transfer it, and that will not have any adverse effects on you. Then there's no breach. And then there is no breach. Yeah. Sir, in this situation, there's also this other party that's going to sell him the house. Yes. If they don't do it, that's conditional. That's Yes. not an agreement. Because there's someone else involved in this whole situation. That is a contingent contract. It's not something that's very sure. Yes. Like if a company is producing something for you, that's sure that they're Sure. going to produce it. But if there's someone else involved, then that's conditional contract. Yes. In that case, when the condition is already explained Yeah. in the contract, then there is no obligation on the person who is agreeing to sell. Okay. As long as you mention it. Yes. You know that's why you have been even in religiously be asked that whenever you enter into an agreement, reduce it to writing. Orally, we tend to forget certain things and a number of things. It is always advised that you reduce it to writing. हमारी सोसाइटी में बहुत सा होता है, आप कहीं दफा जाते हैं और वो क्या कहते हैं, या तुझे मेरी जुबान पे एतबार नहीं है। ये एक बड़ा पॉपुलर सेंटेंस है हमारे यहाँ। और बाद में जो है वो फिर बंदा वो जो है वो कहता है नहीं मैंने ऐसी बात तो नहीं की थी, मैंने तो ऐसी बात की थी। इधर तो थोड़ा फॉन्ट बड़ा है यार। चलो आगे चलो यार, ये चीजें डिस्कस हो गई। नहीं पीछे ज्यादा, हाँ इससे पीछे वाली ये नो और ये नजर आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. नो जो डिफरेंस है बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, जो डिस्टिंक्शंस आ रही हैं उसमें नंबर 1 इज नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन सेल
A sale is an executed contract. वो हम already पहले भी इसको देख चुके हैं. And an agreement to sell is an executory contract. As relation to the transfer of property in the goods, sale, the property in goods transfers to the buyer, whereas in agreement to sell, the property in goods remains with the seller. आगे जैसे क्योंकि वो असल चीज में हमने आगे आना है यार, ये हम बेसिक में फंसे हुए हैं. So in risk of loss, in agreement, it is clear? Yes, sir. आगे consequences of breach, वो जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे वो आगे है. मैं रीड कर देता हूं ताकि आप इसको जल्दी से निकल जाए. On breach of an agreement to sell by the seller, the buyer can sue the seller for damages, but if after a sale the seller breaks the contract, the buyer may sue for delivery of goods or for damages. In an agreement to sell, if the buyer fails to accept the goods, the seller may sue for the damages only and not for the price. On a sale, if the buyer does not pay the price, the seller may sue for the price. Clear है? Yes, sir. आगे. In a sale, if the buyer is adjudged insolvent, the seller, in the absence of a lien over the goods, is bound to deliver the goods to the official receiver of assignee. The seller will, however, be entitled to a rateable dividend for the price of goods. In the agreement to sell, when the buyer becomes insolvent before he pays for the goods, the seller may not part with the goods. आगे. चलो बेटा. गड़बड़ कर गया. ड्राफ्टिंग की गलत हो गई है यार. मेरे पास तो प्रिंट ठीक है, क्या तो कुछ नहीं उसकी वो नहीं आ रहा. What do you mean? You understand from the word drafting? Preparing a legal document. क्योंकि अब मैं कहता आपका तो कोई आज कोई सेकंड लास्ट डे है. Yes. और आपका तो बहुत, और ये तो बेसिक चीज आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ी होगी. What is meant by drafting? मुझे ये कहीं पे लिखा हुआ मिला था, मुझे पसंद आया था, तो मैंने लिख दिया है. Drafting in the legal sense means an act of preparing legal documents like agreements, contracts, deeds, etc. Actually, the drafting, you cannot come across a proper definition of it until unless you come across the context of that job that you want to do. It spans from pleading, be it a small application or a suit, agreement, deed, whatever. In a legal, Structured. it has to be a structured approach, and that is drafting. So over here we will be confining ourselves. ये मैंने जगह से कहीं समझें कि मैंने वैसे आप जहाँ से भी कोई चीज़ उठाया करें उसकी रेफरेंस दे दिया करें. हम नॉर्मली इस पे बिलीव नहीं करते. तो मुझे ये कहीं से मिला था जहाँ से भी, तो मैंने इस आर्टिकल से ये आपको रेफरेंस दे दिया है, वो आप देख लीजिएगा. There are two phases in drafting. The first, naturally, is the conceptual one. Whatever thing comes to you, your client comes to you and explains your case to you, what you will do? Take the notes and try to understand it. अब क्या किसी ने
शायद मेरे ख्याल इन्होंने पढ़ा हो, जो जेडी करके आई हैं, वो क्लाइंट काउंसलिंग, बाकी शायद किसी ने नहीं पढ़ा होगा। क्लाइंट काउंसलिंग का कोर्स किसी को पढ़ाया गया था? आपको पढ़ाया गया था? But when you go, you interview your client, how to interview your client, how to get information. देखिए आपके पास जब क्लाइंट आएगा, it is not always easy that he will be giving you the true and complete picture. So first of all, your art starts how to get information from him and use it for his benefit. Until unless you are unable to get the complete information from one person or your client, it will be very difficult for you to draft. And the second thing is, वो ये वर्बल है कि आपने उसको करना है. Now, prior to drafting, what you have to do, you have to find the right words. Sometimes in a contract, and very soon you will be coming across even the drafting the course and the contracts, and you are confused what the document wants to say. You have to be very, what I say, precise in your thinking and reflecting that in your document. क्योंकि आप बहुत अच्छी आपने सोचा होगा, लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट में वो रिफ्लेक्ट नहीं किया तो उसका कुछ और ही मतलब नहीं कर रहा होगा. So basically, in drafting, first thing is thinking about the issue in hand and then composing it. So composing is the very easiest job. It is other way around. जब हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि यार वो ड्राफ्ट मैंने करना है, बड़ा मुश्किल है, मैंने टाइप करना है या मैंने उसको लिखना है. It is other way around. Composing is a very easy job. But उससे जो पहले का मरहला है वो डिफिकल्ट है. Thinking and bringing your thoughts. अगली जो है ना, ये तो मैंने इसको कर दो, ये सबको आता है. Now, what is deed? आपने एग्रीमेंट बहुत सुने होंगे. Why there is a difference? समटाइम हम सुनते हैं कि डीड्स, कुछ डॉक्यूमेंट के लिए वर्ड डीड इस्तेमाल होता है. कौन कौन से हैं? और yes, Mortgage deed. Indeed. Mortgage deed. yes, indeed. सर बहुत से डिवोर्स डीड हो गया सर, रिलीज डीड बहुत से. तू खतरनाक गाली कर. वैसे मैंने खुद सोचता हूं कि वाई डाइवोर्स के साथ डीड का लफ्ज आता है. और नॉर्मली डीड जो है वो वहां पे इस्तेमाल होती है जहां पे नहीं when the property is transferred in goods. सर वो एग्रीमेंट पे जब लिखा जाता है तो उसको फिर डीड ही कहते हैं ना. वो वैसे इस पे सोचिएगा कि वाई डाइवोर्स इज डीड. There is no property in goods is transferred over. वो भी तो एक एग्रीमेंट ही हुआ ना. नहीं, एग्रीमेंट को जो है वो अपना जो है वो ये ग्लास खरीदने का एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट इसको क्यों नहीं कहते कि डीड ऑफ सेल ऑफ अ ग्लास. वो होती है ना ठीक है, सर, या गाड़ी खरीदते हैं जब आप, वो पर्ची होती है ना सर दुकान. पर्ची, उसको डीड तो नहीं कहते ना, उसको एग्रीमेंट कहते हैं. ठीक है ना सर. सच्चा बताओ, मुझे भी नहीं पता.
कि उसको क्यों कहते हैं डाइवोर्स डीड? नाउ चलें, अब डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये आपको शायद दूर तक नजर आ रहा होगा, जिसमें ये सारी चीजें होनी जरूरी है। अब क्या क्या है, ये रिटन फॉर्म में होगा। एग्जीक्यूशन तो जरूरी है, होगी। कंसेंट है, इंटरेस्ट इन सम प्रॉपर्टी और सब्जेक्ट मैटर है, राइट है, governed by some law and affecting the legal relation. So the difference क्या है? What's the difference there? Actually, ये जो है ना, कुछ there are certain things which are used norms में. Deeds are normally the word deed is used for immovable property where the rights are transferred. इसमें पार्टनरशिप डीड है वो, और उसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं, मतलब वो उसके यहाँ ये हो जाता है। लेकिन जहाँ पे राइट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर इन्वॉल्व, वो नॉर्मली उसको टाइटल डीड कर दिया जाता है। अगर उसको हम टाइटल दे दें एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक नॉर्म, वो एक है ना, देर आर सर्टन नॉर्म्स जो अब चेंज हो रहे हैं और आप लोगों को करना चाहिए। हम जो है ना वो बाबे लोग, वो ये बहुत सी जार्गन्स आपको इस्तेमाल होते नजर आएंगे, वेयर ऑफ, देयर ऑफ, हैंस फोर्थ, वेयर एज, ये दीज आर नाउ आर द रिडंडेंट जार्गन्स। वो रिस्पेक्टफुली शिवित या समथिंग वो भी यूज होता है, बड़ा स्ट्रेंज सा। हाँ, उसका क्या मतलब? ये जो है ना वो अब ये अल्लाह जाने किस लैंग्वेज का लफ्ज है। हम भी पहले शुरू में लिखते रहते थे, डिक्शनरी में मतलब ढूंढा, डिक्शनरी में वो मिला नहीं, फिर नेट पे अब ढूंढा तो वहाँ कहीं से टूटा भजा मिल गया मतलब उसका। वो जो है ना वो जो है ना जो ओल्ड इंग्लिश जो उसमें जो पूरा वो झुक के और वो बो करके तो वो जो पेश होते हैं ना, ठीक है, वो गुलामों वाली तरीके से जब आप अपने आप को पेश करते हैं कोई अर्ज करने के लिए, तो वो जो है विक्टोरियन इंग्लिश में इस्तेमाल होता था। लेकिन विक्टोरियन इंग्लिश का प्रॉब्लम यह है कि उसमें अंग्रेजी कम और लैटिन ज्यादा है। जो है कुछ ड्राफ्टिंग में आप शायद आगे आएंगे, हम रिपीट करते हैं वर्ड, तो वो जो होता है अपना कहीं से, अब जब आप जो क्लियर है लफ्ज जो हम ड्राफ्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, वो फ्रेंच वर्ड क्लैर, CLAIR, वो वहां से उठाया गया और वो उसके बाद हमने वो शुरू में तो उसी तरह लिखा गया, बाद में हमने उसको जो है ना वो क्लियर लिखना शुरू कर दिया और वो अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया। तो वो कुछ ट्रेडिशनली जो है वो चीजें आ गई और वो उस पर आप जो है अब आप शाद नादर किसी रीडिंग्स में देखते हैं जो ये शवित इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ अब नॉर्मली जो लोग हैं वो जो ओपनिंग ऊपर छोटा सा आधा सेंटेंस लिखा जाता है वो है द पिटिशनर रिस्पेक्टफुली सबमिट्स, या इस किस्म का। अब तो कुछ एक दो वकीलों को मैंने देखा वो रिस्पेक्टफुली भी नहीं लिख रहे, वो कहते हैं द पिटिशनर हेयर बाय सबमिट्स, वो कर देते हैं। एंड नाउ वी कोर्ट्स आर एंड एवरीबॉडी इज नाउ एक्सेप्टिंग। वो देखें ना वो अंग्रेज जिनके हम कहते हैं उनके यहाँ था, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जब बनाई यूके में तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। हमारे यहाँ ये गाउन जो है सर्दियों में हम 4 महीने पहनते हैं और आजकल तो हमें जो है वो बुखार होता है, गर्मी इतनी है ऊपर से वो गाउन भी पहनना पड़ता है और कोई रिक्वेस्ट करते हैं कोई सुनता भी नहीं हमारी। लेकिन यूके में 2010 में दे क्रिएटेड अ न्यू सुप्रीम कोर्ट। उससे पहले हाउस ऑफ लॉर्ड था, तो दे डिस्पेंस विद द हाउस ऑफ लॉर्ड एंड एस्टेब्लिश्ड। आपको पता है उसके बनाने में 3-4 चीजें हैं जो उन्होंने उस पर वर्कआउट किया और दे केम अप विद सर्टेन आइडियाज। 1, डिस्पेंसेशन विद द यूनिफॉर्म, ड्रेस कोड नहीं, ब्लैक
जो उनका ट्रेडिशनली है, जो ब्लैक होगा और वो बो और टाई एंड देन विग एंड ऊपर से वो जो है रोब, और उनके यहाँ रोब जो है, जो हमारे यहाँ ये जो गाउन है ना, जो रोब है यूके में, वो 3 किस्म के आते हैं। 2 जो हैं वो तो जूनियर बैरिस्टर्स पहनते हैं, और जो सीनियर हैं, जिसको आजकल का केसी कहते हैं, हाँ वो क्यूसी खत्म हो गया है, तो जो केसीज हैं दे वियर द सिल्क। इफ यू आर नॉट अ केसी, और क्यूसी पहले जो होता था, तो आपको सिल्क का जो है वो गाउन पहनने की इजाजत नहीं है, और इसीलिए जो है वो जो सीनियर उनके होते हैं, क्यूसीज होते हैं, उनके यहाँ एक और जार्गन भी इस्तेमाल होता है कि मिस्टर फलां फलां इज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड सिल्क, वो उसको इस तरह भी रेफर किया जाता है। तो खैर हम सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ये किया, एक ये खत्म कर दिया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जी वकील में और जज में आई कांटेक्ट बराबर होना चाहिए। अरे ये बैठे हुए हैं, वो उन्होंने खत्म किया, और वो ये किया कि वो जो कोर्ट का जो पोडियम था उसका साइज ये रखा कि एक एवरेज साइज का पर्सन जो है, जो इस कुर्सी पे बैठा हो और जो सामने खड़ा है, उनका आई कांटेक्ट जो बराबर होना चाहिए। हाँ, वो उसको यूं करके बात ना करनी पड़े, वो इस पे तो उसका सिर्फ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। हाँ। फिर आप यू ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट टॉकिंग, स्पीकिंग, सिटिंग द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। और तीसरी बात उन्होंने जो की है वो ये थी कि 100% प्रोसीडिंग्स ऑफ देयर सुप्रीम कोर्ट वो लाइव ब्रॉडकास्ट होती हैं स्काई चैनल, 100%। ट्रांसपेरेंसी। उसके बहुत से फायदे हैं। जज तैयार होके आता है, वकील भी तैयार होके आता है। जिस दिन मुझे ये पता हो कि पूरा पाकिस्तान जो है ना वो मुझे देख रहा होगा, और मैं वहां पे जाके कहूंगा माय लॉर्ड, मैं आज तैयारी करके नहीं आया, मुझे तारीफ दे दें, तो मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। तो देन मैं प्रिपेयर होके आऊंगा, और जज को जब ये पता होगा कि अगर मैं कोई ऐसी फजूल बात करूंगा और पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तो वो भी पढ़ के भी आएगा और मोहतात भी रहेगा। तो वो अपनी ट्रेडिशन से वो हट गए, और लेकिन हम वो अभी वहीं के वहीं खड़े हैं। सर हम उनकी अच्छी चीजें क्यों नहीं अडॉप्ट करते, सारी बुरी चीजें? इसलिए कि हम साइकोलॉजिकली अभी तक जो है वो उस मेंटेलिटी से बाहर नहीं आए। और प्रॉब्लम ये है कि वो मेंटेलिटी उस वक्त भी वहां पे नहीं थी, उसने वो यहां के लिए अडॉप्ट की थी, क्या ना, लेकिन हम अब उसी में ही हैं। एनीहाउ, पहले डॉक्यूमेंट निकालिएगा, क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज द डॉक्यूमेंट? ये डेफिनेशन आपको डॉक्यूमेंट की नॉन अदर देन एक ऐसे कानून में मिलती है। ये डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में होनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डेफिनेशन जो है ये कानून शहादत में है। तो वो बड़ा रेलिवेंट है लॉ है, क्योंकि if the law of evidence does not accept any paper or instrument as a document, तो उसकी कोई कोर्ट में तो आपकी वैल्यू नहीं होगी ना। सो मे बी ये लॉजिक थी कि डॉक्यूमेंट को डिफाइन वहां किया गया। ये अगर आप उस टेस्ट को पूरा कर लेंगे, द टेस्ट विच इज सेट बाय द लॉ ऑफ एविडेंस, तो फिर तो उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं, उसमें क्या होना चाहिए? उसमें उसका एक मैटर होना चाहिए जो एक्सप्रेस भी हो सकता है या और डिस्क्राइब होगा, किसी सब्सटेंस के बारे में होना चाहिए, उस पर जो चीज लिखी गई है वो बाय लेटर, फिगर, मार्क्स एक्सप्लेन होनी चाहिए,
एंड उसको यूज करने की इंटेंट होनी चाहिए आपकी कि वो डॉक्यूमेंट आप यूज करेंगे, चाहे वो एग्रीमेंट टू सेल है या वो एग्रीमेंट ऑफ सेल है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, वट एवर होना चाहिए, एंड फॉर रिकॉर्डिंग द मैटर वो तो। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, ये छोटा सा मैंने नीचे लिख दिया है, बिटवीन कन्विंसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। कन्वेंस डीड जो होती है, जो नॉर्मली हमारे यहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होता है, वो उसको हम कन्वेंस डीड कहते हैं। अब वाई? बिकॉज इन दैट वेयर एवर अ प्रॉपर्टी इन अ गुड इज ट्रांसफर्ड, वो कन्वे करेगी, और जब वो कन्वे करेगी तो हम उसको कन्वेंस। एंड डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन? वो लिखना, उसको फाइनलाइज करना, उसको एग्जीक्यूट करना। So these are the processes of documentation. ठीक है? Now coming to drafting of contract पे जो है, ये डेफिनेशन तो सबको आती है, और मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं आती होगी, कम अज कम ये सबको आती है। आती है कि नहीं? चलो मैं पढ़ देता हूं यार। एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल एट लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिक डेफिनेशन है ना। जनरली व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिड्यूस्ड टू राइटिंग, द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। अच्छा, अब वो जो बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर नो स्पेसिफिक फॉर्म्स, आपको मिल जाती है। हम ये कहूंगे एक यही फॉर्म है, ये नहीं है, बट यू कैन गेट लॉट ऑफ टेम्पलेट्स। अब तो बुक्स मिल जाती हैं, देयर आर नंबर वॉल्यूम्स में हैं, यू कैन गो एंड हैव टेम्पलेट्स अवेलेबल टू यू, एंड आई एम श्योर यू ऑल विल बी यूजिंग टेम्पलेट्स इन फ्यूचर। ये टाइम अब गुजर गया है कि वो कहें जी कि ओरिजिनल एग्रीमेंट लिखा जाएगा एबीसी से आपके पास। अब तो वो आपके डेटाबेस में पड़े होंगे, और आप, लेकिन you have to be very careful about it. Using a template for your specific requirement is a very tricky business. क्या हम उसमें बहुत सी चीजें जो होती हैं ना, उसको कहते हैं ये छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉयलर पॉइंट क्लॉजेस, we tend to ignore it. एक कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन की क्लॉज, हमें कहा यार ये वाली इस पे भी लगा दो। फोरम सिलेक्शन क्लॉज है, अगर आपने उसको केयरफुली नहीं देखा, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय ओन केस। इन एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वो क्योंकि सब्जुडिस है तो मैं पार्टीज के नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा। इन एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, एन इंटरनेशनल कंपनी वाज सेलिंग इट्स सब्सिडियरी इन पाकिस्तान, एंड व्हाट दे डिड, दे इशूड लीफलेट explaining the terms and conditions. And one of the clause was the forum selection clause. You are familiar with the forum selection clause on forum selection clause? You don't know. Okay. Forum selection clause is a clause in an agreement where the parties agree if there is any dispute arise between them, so which law will prevail? A, B, जी बेटा सवाल आ रहा है पीछे। हाँ, क्या कहते हैं फोरम? फोरम सिलेक्शन क्लॉज। Now what, you know, that is
that revolves around certain ideas. One is which law will prevail. And in certain agreements, a party is from, say, Singapore, B party is from Pakistan, and they select that, okay, if any dispute arises between us, the courts of the United Kingdom will have the jurisdiction. It is perfectly all right and is an acceptable norm. Which law will apply? I can say that the laws of the UK will apply. I can say that the courts of the UK will have the jurisdiction, but the laws of the Switzerland will apply. If the parties agree, they can agree. Or we can say the laws of Pakistan will apply, but the jurisdiction will be to the courts of Switzerland. So, and same is the case with the arbitration proceedings. And in that particular brochure, there was a clause saying that each and every issue directly or indirectly connected with the proceedings will be brought to the arbitration, and the laws of the United Kingdom will apply. And then there is a mechanism of arbitration was provided. What happened that 2 days before bidding, my client wrote to them that the time is short, please give us an extension. So they refused. But there is no need. The time is not going to be extended, so you have to file. Mind it that they were required to file their offers electronically. So they filed it. And after filing of 3 days, they came to know that the date was extended 1 day before the filing of the bid. It was communicated to all but to my client. They lost. They filed a suit for deceit. Suit of damages for deceit. The application under जिसने सीपीसी पढ़ी है, किसने पढ़ी है सीपीसी? तो लाल तुमने पढ़ी होगी यार. सारे लोकल ने हाथ नीचे कर दिया है कि जैसे किसी ने सीपीसी नहीं पढ़ी हुई. मैं कोई मुश्किल बात नहीं करने लगा. ऑर्डर 7 रूल 10 की बात कर रहा हूं. ठीक है, रिटर्न ऑफ प्लेंट. So they filed an application under order 7 rule 10. The plaint be returned and the plaintiff be asked to file the suit in the proper forum, that is the courts in London. And in the argument, we were asked and the plaint was returned to us because that one line says that all incidental issues arising out of that transaction will fall under that clause. अब ये negotiate करते हुए ये छोटी छोटी चीजें भी देखनी होती हैं कि whether the issue of deceit will also fall in that or not. Coming to this one, that in the form of contract जब आप जाते हैं और आप देखेंगे कि आपको मिल गए हैं templates, and in templates you came across the boiler point clauses, वो अमूमन जो है लोग कहते हैं कि ये तो जनरल किस्म की, इसकी जरूरत कब पड़ेगी, फोरम क्लास कब यार इन्वोक होगी, आर्बिट्रेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारा तो बड़ा पुराना काम चल रहा है. And a number of, because in contract जो ये क्लासेस हैं ये बहुत ज्यादा होती हैं.
और शायद हम वकीलों ने भी उनको बहुत ज्यादा याद किया होगा, क्योंकि वो जब तक डॉक्यूमेंट मोटा नहीं होगा ना तो वो क्लाइंट पैसे नहीं देता, और वो बिलेबल आर्स भी नहीं बनते ना। जब अगर मैं उसको ये कहूँ ये मैंने आपको 4 सफों का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, वो कहेगा कितने घंटे लगे होंगे यार, 2 घंटे लगे होंगे, 2 घंटे के पैसे दे दो, ठीक है। लेकिन अगर वही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैं उसको जो है वो 17 सफों का बना के दूंगा, वो तो कहेगा ये वकील ने बड़ी मेहनत की है, और बनाया एक दफा होगा, उसके वो जो पहली दफा जो एग्रीमेंट बनने में टाइम लगा था ना, वो हर क्लाइंट को वो टाइम जो है ना वो बिल किया जाएगा। ऐसा ही होता है ना बिलेबल आवर्स में। तो खैर, सो देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म कि आपने ये कहना कि ये इस किस्म का होगा। आप उसमें जो करनी है आपने वो आगे जब याद रखो, ये वो जो वैलिड और एवरी टाइम नहीं इतनी खराबी नहीं है यार, तुम एवं खाम खा जरा तुम हो जाते हो, वो आगे नहीं मेहनत कर रहे हैं, उसकी बिजली खत्म होने वाली है वो, ठीक है। ये इसको कोई देखने की खास जरूरत नहीं है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट अगर आपको नहीं पता तो फिर मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता। ये दो, ये आप कुछ चीजें ये जरा आप ध्यान में रख लीजिए। While drafting the contract, आपने किन चीजों के बारे में ध्यान देना है? फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टी, ये प्रॉपर होनी चाहिए। इफ द पर्सन इज इंडिविजुअल ये बड़ा आसान होता है, बट इफ द पर्सन इज नॉट अ लिविंग पर्सन बट अ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ये ट्रिकी बिजनेस हो जाता है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जो पार्टी साइन कर रही है उसके पास अथॉरिटी भी है कि नहीं। If a company is signing and the person who is signing on behalf of the company, whether he has the authority to sign it or not, ये आपने पहले श्योर होना है, because if one does not have an authority, तो वो at a later stage को बहुत प्रॉब्लम आता है। तो अथॉरिटी कैसे आसान होगी? In companies, corporate, okay, चले हम कंपनी दे लेते हैं। In companies, what happens is that a resolution is passed by the board of directors. There are different ways. जो छोटी कंपनियां हैं वो नॉर्मली ये करती हैं, हर दफा एक रेजोल्यूशन पास की जाती है। The big, like multinationals and others, what they do is वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, which is an omnibus resolution, और उसमें वो करेंगे ये कि या तो किसी एक पर्सन को अथॉरिटी दे देंगे और उसको साथ ये भी ऑथोराइज कर देंगे कि ये फर्दर भी डेलीगेट कर सकता है। अगर वो नहीं किया हुआ तो फिर वही साइन करेगा, और उसके लिए वो उसको फिर जब वो आप करते हैं तो एक पावर अटार्नी भी असाइन कर दी जाती है, एग्जीक्यूट की जाती है, पावर अटार्नी को दी जाती है। एंड देन दैट इज ऑलवेज, कोर्ट केसेस में तो वो साथ एनेक्स हो। फिर मैं सीपीसी की बात करूंगा, देयर इज अ फुल चैप्टर ऑन इट इन सिविल प्रोसीजर कोड, suits by or against corporations, और I would recommend कि वो भी आप जरा वो देख लीजिए। किसी को याद है उसका क्या नंबर है? 41 है 43 है? suits by or against corporations, नहीं आता? इस्लामी यूनिवर्सिटी वाला तो आएगा ही नहीं, मुझे पूरा पता है, मैं रोज वहां होता हूं, क्योंकि तुम लोग जो ना वहां पे तलाक क्या करते थे, ज्यादा कोशिश ये होती थी कि टीचर जो है ना वो आज ना आए और हम चाय वाय पी के खाते थे। मैं खुद पढ़ाता हूँ यार उधर में, मुझे प्रॉब्लम, ये बच्चे जो है ना वहां वाले बहुत करें। अच्छा आगे देखें, लीगल नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। In the contract, there are certain parts of the contract. The title one, parties, then comes the recital.
जहां पे आप उसका मकसद बयान करते हैं, वो बहुत सारे वेयर एज आ जाते हैं, बट इतना लंबा नहीं करना कि वो कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा हो जाए और इतना छोटा भी नहीं करना कि वो मकसद ही उसका, बट वट एवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो आपने पार्टी के बाद उसको रिसाइटल में एक्सप्लेन कर द पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आगे नाउ इफ, ये जरूरी नहीं है कि ये हो, बट फॉर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट एंड डूइंग बिजनेस यू नीड लाइसेंसेस। अब तो काफी सारों में आ गया है, बट अब टेलीकॉम का काम करने आए हैं, यू नीड द लाइसेंस फ्रॉम द पीटीए। यू वांट टू डू बिजनेस इन ऑयल एंड गैस, तो आपको तो जाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू इस्टेब्लिश पावर हाउस, तो वो नेपरा के पास जाएंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो लाइसेंसेस, वट एवर लाइसेंसेस टू डू अ बिजनेस, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वो होने चाहिए। अब यहां पे अच्छा, नेक्स्ट टैक्सेस एंड ड्यूटीज, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये तय करना है कि हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ये हम वकीलों को सिर्फ एक चीज पे याद रहता है, जब हम फी बिल रेज करते हैं तो क्या देते हैं कि जो है ना टैक्स, वो कंपनी खुद पे कर रही है, हमारे बिल में से ना कट लिया। खैर अभी ठीक होता जा रहा है। अब उन्होंने एक और काम शुरू कर दिया, वो अपने बिल में उसको जो है वो क्या करते हैं, पैड करते हैं उसको। मुझे 5 रुपए चाहिए, मैं कहूंगा अच्छा बिल जो है ना वो 6.5 रुपए का कर दो, 1.5 रुपए का तो वो टैक्स काट के कर लेगा, मेरे पास 5 ही आ जाएंगे। सारे टाइम आधा घंटा है, हम स्पीड लगा लेते हैं। जी बेटा, तुम दो पूछो यार। जो बंदा है वो करता है, ठीक है, विद इन वीक वो फ्रूट खराब हो जाता है सर, वो बंदा खरीदता नहीं है, वो खराब हो जाता है। तो जो एक्चुअल लॉस हुआ बहुत हो गया, वो डैमेज भी क्लेम कर सकता है। आप शुरू से बताओ। सर एक बंदा, अब ये जो फ्रूट है सर, फ्रूट के टाइम पे फ्रूट बेचने का वो एग्रीमेंट टू सेल करता है कि मैं आपको भेज दूंगा विद इन वीक। वो जो बायर है सर, वो विद इन वीक नहीं खरीदता, वो खराब हो जाता है सर। फ्रूट एक्चुअल डैमेज हो गया सर, वो फ्रूट खराब हो गया, वो एक्चुअल डैमेज के साथ जो डैमेज क्लेम कर सकता है, वो सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हैं। एक्चुअल लॉस हो गया ना। लेकिन ना एग्रीमेंट टू सेल था, अब यही कह रहे हैं ना कि मेरे फ्रूट पैदा होगा तो मैं तुम्हें बेचूंगा, और उसने कहा तुम्हारा जब फ्रूट पैदा हो जाएगा तो मैं खरीदूंगा। नहीं, फ्रूट था सर, हाँ सर, फ्रूट पड़ा हुआ था, तो उस पर फिर एग्रीमेंट टू सेल तो ना हुआ, तो तुम्हारा वो तो आपने, उसने तो फिर सिर्फ ये हुआ कि डिलीवरी नहीं दी। योर केस इज नॉट कि उसने खरीदा नहीं, आपका केस ये है कि लेकिन आपके पास अगर गुड मौजूद है, चाहे वो फ्रूट है, तो उसका इशू ये होना था कि वो तो एग्रीमेंट ऑफ सेल होना है, उसका एग्रीमेंट टू सेल तो नहीं होगा। वो एक पेरिशेबल गुड है, और उसमें जो है आप ये कह रहे हैं कि जो है वो उसे हफ्ते में खराब होना है, और आप कह रहे हैं वो हफ्ते के बाद खरीदेगा। ठीक है, यहां जब हम जो पहले बात की है, जो आपका जो तो वो है एग्रीमेंट, जिसको आपने क्लैरिटी देनी है, वो यही देनी है ना। अब पेरिशेबल गुड्स को आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो है वो अमरूद है, उसने 10 दिन में खराब हो जाना है, और एग्रीमेंट ये हो रहा है कि मैं 15 दिन के बाद उसको उठाऊंगा। तो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट कि आपने एग्रीमेंट में क्या क्या जी तला।
सर जी जब आप एग्रीमेंट टू सेल जो है अगर वायलेट होती है और आप डैमेजेस पे जाते हैं तो डैमेजेस का जो अमाउंट है वो एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स से ज्यादा आप क्लेम कर सकते हैं। आप जो मर्जी है क्लेम करो, ठीक है ना। आप डैमेजेस क्या होते हैं? The issue is that for damages there is no law specifically, a codified law नहीं है. Damages comes under what law? Yes, that comes under tort. With a tort you have to establish how much damage I have suffered from it. अगर वो बंदा ये कहता है कि इसने ये फ्रूट उठाना था और उसने नहीं उठाया तो वो प्राइस तो क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन वो उसी को जो है वो ट्रांसलेट कर सकता है इनटू डैमेजेस कि बिकॉज ऑफ हिज नॉट फुलफिलिंग हिज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट आई हैव लॉस्ट, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल जो है उसमें आप सिर्फ डैमेजेस, सेलर कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, ही कैन नॉट क्लेम प्राइस, वो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। सर सेलर की पोजीशन में गुड्स खराब हो जाए विदाउट हिज फॉल्ट तो देन द बायर कैन नॉट क्लेम डैमेज। नो नहीं, उनका क्वेश्चन डिफरेंट था। Yeah, वो ये कह रहे थे कि बायर ने नहीं दिया और सेलर को नुकसान हो गया। ये एक डिफरेंट सिनेरियो है ना। मैंने आपसे फ्रूट खरीदना था, मैंने आपसे नहीं लिया और आपने जो है वो किसी और को भी नहीं बेचा कि जी इन्होंने लेना था और वो खराब हो गया। मैं ये चले मैंने कहा मैं गाड़ी भेज रहा हूं आपके पास आ रही है जो कुछ भी है और वो खराब हो गया, अगर तो वो सेल एग्रीमेंट था, पार्ट पेमेंट हो गई थी या जो भी था, तो आप मुझसे प्राइस क्लेम कर सकेंगे। बट इफ इट वाज फॉर फ्यूचर फ्रूट तो इन दैट केस यू कैन क्लेम डैमेज। क्या करना चाहे सर? अगर कोई चीज मंगवा के फिर अगर वो नहीं बेचना चाहते तो वो बायर उसके को डैमेजेस के लिए कर देगा। सर एक्ट ऑफ नेचर अगर के केस में कोई चीज गाया हो जाए तो उसके खिलाफ कोई केस करता तो वो मेंटेनेबल होगा। इशू ऑफ फोर्स मैज्योर इज ऑलवेज एक्सप्लेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट और वो किया जाता है जब हम बॉयलर पॉइंट हैं। एक्ट ऑफ गॉड विच जनरली हम लीगल जॉर्गन में उसको क्या इस्तेमाल करते हैं, फोर्स मैज्योर, ठीक है। तो अगर फोर्स मैज्योर है तो ये तो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म है, इट एस्टेब्लिश्ड लॉ दैट एन एक्ट ऑफ गॉड। अब फॉर एग्जांपल वो बंदा आ रहा था, उसने मैंने फ्रूट खरीदा और वो सवाद से चल पड़ी खुबानियां और वो रास्ते में जो है वो ट्रक जो है वो पहाड़ से नीचे गिर गया, तो उसमें सेलर का क्या कसूर था, है ना। वो उसके कंट्रोल में नहीं था, ना वो उसके कंट्रोल में था ना वो बायर के कंट्रोल में था। सो द एक्ट्स द एक्ट्स which are not in the control of either buyer or seller, either party cannot claim benefit out of that. इससे रिलेटेड एक मजीद सवाल, आप सारे तौर पे एक सेलर और बायर एक सेल एग्रीमेंट करते हैं फ्रूट्स का। सेलर कहता है, सेलर पैसे ले लेता है और वो कहता है मैं हफ्ते के बाद डिलीवरी आपको दूंगा। डिलीवरी के लिए वो एक सब कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को। अब जब वो ट्रांसपोर्ट कंपनी को ऊपर हैंड ओवर करता है और फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी की कस्टडी में चीज आ गई, वो ट्रांसपोर्ट कर रही है और वो तबाह हो जाती है, तो जब वो बायर जो है जब वो सूट फाइल करेगा तो वो उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ करेगा, दोनों के खिलाफ करेगा, किसके खिलाफ करेगा? उसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? तो फिर सेलर को करेगा। ही इज नॉट, ना क्वेश्चन ये है कि हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इट। कॉन्ट्रैक्ट ये डिफाइन करेगा ना कि मुझे गुड कहां पर डिलीवर होनी है। आइदर इट इज एट साइट, मैंने वहां से उठानी है, और ये जो इंटरनेशनल में आप आएंगे तो उसमें इज इट एफओबी ऑन बोर्ड है, सीएनएफ है, एट माई साइट है। ये तो आपने कॉन्ट्रैक्ट पे एग्री कर लिया होगा ना। अब इस सिनेरियो में देख लेंगे, अगर ये था कि बायर जो है वो मुझे मेरे प्रेमिसेस में पहुंचाएगा, तो मेरे प्रेमिसेस में नहीं पहुंची वो प्रोडक्ट, चाहे वो रास्ते में ट्रक लुट गया,
गिर गया, खराब हो गया, किसी वजह से हुआ, अगर ये एग्रीमेंट था कि जो प्रोडक्ट है वो बायर के प्रीमिसेस पे डिलीवर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है, तो वो सारा जब तक नहीं हो जाती रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, चाहे वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं। हाँ, अगर ये थी कि मैं उसके वेयर हाउस से पिक करूंगा, तो द मोमेंट मैंने वहां से पिक कर ली, चाहे मैंने किसी ट्रक वाले को ठेका दे दिया था, उसने पिक कर लिया और हो गया, तो फिर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। तो दीज आर द थिंग्स जो अगर कहेंगे तो मैं पिछली उस पर स्लाइड पे वापस चला जाता हूं कि क्लैरिटी जो है वो आपने वहां पे इस पे होनी है। ये सिर्फ नहीं है कि वो बेच रहा है और ये खरीद रहा है, इशू ये है कि ये बेचना जो है वो कहां पे उसको डिलीवर करेगा और वो उसको कहां रिसीव करेगा। दावा सर कंज्यूमर कोर्ट में होगा जी, दावा कंज्यूमर कोर्ट में होगा नहीं, ये सिविल कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट में तो कंज्यूमर जाएगा, वो उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड है। अगर आपने वो अब हम वो उल्टी टाइम कितना है, अगर थोड़ा सा कंज्यूमर कोर्ट का जो है वो इज अ एंड यूजर, जो कंज्यूमर है, इफ ही हैज एन इशू विद द सेलर कह लें, सर्विस प्रोवाइडर कह लें, क्योंकि उसमें सर्विस प्रोविजन भी जो है उसमें शामिल है, तो वो उस पर्टिकुलर के खिलाफ है। सर, आपने अगर किसी पेड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, तो ये वो ली जाती है कि इन अ वे यू एंड द सेलर या जो कंपनी जिसने भी वो प्रोवाइड कर रही है, यू हैव एंटर्ड इन अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह का रिलेशनशिप है जिसमें आप फिर अपने राइट्स क्लेम कर सकते हैं। Whether it is a contract for supply of goods or services, the principle will remain the same. लेकिन मैं जैसे कंज्यूमर एंड यूजर की बात कर रहा हूँ, जैसे हम मार्केट से जाके किसी भी ब्रांड की कोई चीज उठा लेते हैं और ड्यू टू सम रीजन उसकी क्वालिटी खराब होती है, इसके हेल्थ इम्प्लिकेशन हो जाते हैं या एनी अदर थिंग, इफ इट्स अ व्हीकल उसमें सेफ्टी का इश्यू होता है, और मैंने किसी से तो कहना है ये प्रिजम्पशन ली जाएगी कि द सेलर या प्रोड्यूसर or the end user, they were in a kind of a contract. Let's make it the issue now. फॉल्स एडवर्टाइजमेंट में नहीं आएगा। No, वो जो है deception is another thing. No, actually now we are drifting a little bit, but no issue. In consumer cases, the case which the gentleman is referring to is, और आप इन्होंने उसको जो है वो आप, and you will be correcting me if I am wrong, ये कह रहे हैं कि इन्होंने बाजार से कोई चीज खरीदी और वो पर्टिकुलर गाड़ी का मसला, तो क्योंकि गाड़ी का मसला हमारी भी नजर में था, तो वो उस पर हम देख लेते हैं। गाड़ी है टोयोटा। अब दो सिनेरियो, एक ये है कि मैंने नई गाड़ी खरीदने के लिए मैं किसी शोरूम पे चला गया और मैंने वहां पे पेमेंट कर दी, वो वहां पे गाड़ी डिलीवर हुई, मैं जब लेके आया तो देयर वर सर्टेन फॉल्ट्स इन दैट इवेंचुअलिटी, यस यू विल बी सुइंग दैट, फॉर एग्जांपल टोयोटा, होंडा, व्हाटएवर, वो प्रोड्यूसर एंड द शोरूम, बिकॉज ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द, बट देयर इज अनदर सिनेरियो आपकी व्हीकल के मामले में भी। मेरी गाड़ी थी, मैंने 2 साल पहले जो है टोयोटा से खरीदी थी और आज आपको बेच दी, और आपको बेचते हुए रिसीट पे मैंने ये जो है वो कोवेनेंट नहीं दिया कि आई एम सेलिंग इट और यू आर बाइंग इट ऑन एज इज वेयर एज बेसिस। इन दैट केस यस यू कैन कम एंड सू मी कि यार आपने तो मुझे बताया नहीं था कि ये गाड़ी जो है इसमें तो ये खराबी है। बट इफ द इशू इज that on the receipt it is clear that you are buying it as is, where is basis, then you are responsible that you have not done your due diligence. मैं टोयोटा को सू नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन इन दैट केस एक 2 साल गाड़ी जो सड़क पे चल गई है, टोयोटा पे जाइए क्या करना है, मैंने पता नहीं कैसे चलाई थी। सर विद योर परमिशन एक और सिनेरियो, क्विक सिनेरियो, आई नो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अच्छा, गाड़ी का तो थोड़ा ये है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एक कॉन्ट्रेक्चुअल वो होती है कहीं ना कहीं रिटर्न किसी फॉर्म में। आप ये जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जैसे आई बाय अ पैकेट ऑफ
आपने पेप्सी की बोतल खरीदी, पेप्सी की बोतल खरीद ली और उसमें कुछ मसला हुआ और हेल्थ इम्प्लीकेशंस हुए, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया या मैं मर गया या किसी की डेथ हो गई। अब यहाँ इस केस में तो कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट या किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन उस तरह की नहीं है। कैन द इफेक्टिव सू पेप्सी या जो भी कंपनी है जो प्रोड्यूसर है? पहली होल्ड, यानी कॉन्ट्रैक्ट की प्रिजम्पशन दी जाएगी? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की प्रिजम्पशन ली जाएगी और उसमें है when you go in these days I seldom come across कि आप स्टोर पे जाते हैं तो आप अगर पेप्सी की बोतल लेते हैं तो वो टेलर को करके आपको एक रसीद निकाल के दे देता है, ठीक है। वो एक रसीद आती है जिसपे आपकी प्राइस है, कितना आपने सेल टैक्स दिया है और आपको व्यक्ति आपका नाम नहीं है उस पर, स्टोर का है, तो यू कैन क्लेम दैट एज एन एग्रीमेंट कि ये मैं इन कंज्यूमर लॉ देयर इज नो नीड ऑफ हैविंग अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। इन कंज्यूमर लॉ यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव परचेज्ड इट फ्रॉम अ पर्टिकुलर शॉप, और वो आपने साबित करना है कि मैंने ये उस दुकान से ये चीज खरीदी है। ये अगर आप कर लिया और प्रोडक्ट वॉज डिफेक्टिव, यू कैन गो अंडर कंज्यूमर। So same goes for services, like if you go to a salon and they burn your hair, for example, so that also comes in. बिल्कुल, ये इसकी तो आपने रसीद जरूर ले मुझे आगे नहीं चलने दोगे, है ना? दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होती है, मिसाल के तौर पे एक पार्टी कहती है मैं आपको 2 साल के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करूंगा इतने मंथली पैसे, और वो 2 साल की प्रोवाइड करता है। एग्रीमेंट की ड्यूरेशन 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन वो एग्रीमेंट उसी तरह एग्रीमेंट वो पे करते रहते हैं, बिलिंग उसको आती रहती है और वो सर्विसेज भी रिसीव करता है और पे भी करते रहते हैं। इवन दो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 ईयर का पीरियड मेंशन्ड है कि ये 2 साल के बाद, फिर 2 साल गुजरने के बाद अगर वो जारी रखते हैं अपने ताल्लुकात, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या हैसियत हो जाती है? मतलब वो यही समझा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन एक्सटेंड हो गया या क्या? तो आप भी सही कह रही हैं और वो भी सही कह रहे हैं। आप दोबारा बनना चाहिए, नहीं हुआ तो दैट इज बाय इम्प्लीकेशन। आपका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट उसको तो आप इंटरनेट सर्विस की बात कर रहे हैं ना, आपका घर किराए पे है, किराएदार से आपने ये कहा कि ये आपका मकान जो है वो 1 साल के लिए मैं ले रहा हूं, और 1 साल के बाद जो है वो आप किराएदार से किराया लिए जा रहे हैं और वो आपको किराया दिए जा रहा है, तो वो इम्प्लाइड है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन प्लेस है। सेम गोज फॉर योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर आपने वैसे इस किस्म का कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, मैंने देखा जो 2 साल के स्पेसिफिक के लिए आपको कहता हो, वो फाइन लाइन में वो सारे एग्रीमेंट पढ़ लेना। अच्छा आगे सर, मैं थोड़ा टाइम से खा लेना। नजर आ रहे हैं या मैं पढ़ना शुरू करूं? ये वो शुरू में वो बड़े स्पेसिफिक थे, ठीक हो गया, 1 2 3 4। अब दीज आर ऑल वो जो आपने बातें की थी ना फ्रूट वाली या अदर। अब ये देखिए व्हाट इज 5th वन? क्वालिटी, क्वांटिटी एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। ये आपने लेते वक्त करनी है इफ यू आर अ बायर। ट्रक रास्ते में गिर गया, नुकसान हो गया, तो क्या करेंगे आप? इंश्योरेंस करा लेना। अगर नहीं कराई तो फिर जिसकी भी वो गलती थी वो पे करेगा। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, पहले हम बात कर चुके हैं कि इट हैज टू बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। गारंटी, अगर उसमें कोई आप गारंटी दे रहे हैं या वारंटीज दे रहे हैं कि ये इतने साल चलेगा, ये जो है मोबाइल है ये इसकी 2 साल की है या 3 साल की है, तो जी बेटा। सर ये फोर्स मेजोर का जो टर्म है ये नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होती है, लेकिन अगर नहीं है तब भी अंडरस्टूड है कि देखिए, हाँ उसकी वजह फोर्स मेजोर इज अ जनरल। अगर तो अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, वो तो आ जाएगा, बट व्हेन वी ड्राफ्ट द फोर्स मेजोर क्लास तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें भी हम रखते हैं कि ये चीजें भी फोर्स मेजोर में होंगी। बट नॉर्मली दोज आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। अगर आप ये कह रहे हैं जी कि मैं अगर वो सोता रह गया और वो दिन सुबह जो है वो मैं दूध जो है वो नहीं ला सका, तो दैट इज नॉट फोर्स मेजोर। सर एक्सीडेंट्स कम इन फोर्स मेजोर? डिपेंड्स कि आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट में रखा है।
These are the things, अगर आपने ये कह दिया, if your contract is implying that if during the supply of the goods, vehicle encounters because generally that is not force majeure, that is not an act of God, that is an act of person. वो रात को सोया नहीं था, सुबह गाड़ी चला रहा था, वो क्या अल्लाह की गलती है? हाँ, लेकिन it is not always that कि आपकी गलती है, किसी और की गलती है. You should mention that. Yes, these are the areas which generally will fall under force majeure. सर फायर इंसिडेंट्स जो है वो नॉर्मली वो आप पहले उसको रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट है पीछे चले यार, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड पासिंग ऑफ द रिस्क, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. अमाउंट है, फोर्स मेजर कर लिया है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, प्रॉपर लॉ, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड आर्बिट्रेशन, ये हमने पहले सारे कर लिए. आगे चलिए. सर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि जो भी अगर वायलेशन होगी तो हमारी अपनी कमेटी इसको डील करेगी, क्या वो कोर्ट में लेके जा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट? Generally, in contracts which are with the government institutions, वो रख देते हैं कि if parties will have an issue, Mr. XYZ will be a sole arbitrator, these kind of things. If that is in the contract, yes. लेकिन इसीलिए ये है कि while negotiating the contract, one has to be clear. If you have already agreed, तो फिर उस पर लड़ाई जो है वो जरा मुश्किल हो जाती है. आप then you have to establish an issue of biasness, that how much that person is biased, और ये बात तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले भी सोच लेनी चाहिए. पार्टीज भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं. आगे कितनी होगी हमें स्लाइड हैं? बस अब सब्जेक्ट मैटर, यू हैव टू बी क्लियर, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ योर कॉन्ट्रैक्ट stipulates that the time is an essence of the contract, then and you require that it should be like that, then reduce it to writing. या थोड़ी देर रुक जाओ, फिर हम दोनों मिल के बाहर बातें करेंगे. So जैसे होता है कि dated on this but executed on this date. There could be two different dates in a contract, right? नहीं वो और बात, ठीक है ना. वो ये इशू हुआ कि एग्रीमेंट जो है वो एग्रीड आज हो गया जुबानी और एग्जीक्यूट हुआ. वो इसलिए होता है कि आपने क्लियर ये करना है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट उस डेट से शुरू हुआ हुआ. हमने एग्री कर दिया कि ये जो गिलास है ये आपको बेचना है आज, और 15 दिन के बाद हमने एग्रीमेंट साइन किया, तो ये होगा कि दिस एग्रीमेंट वाज एग्रीड अपॉन टुडे बट वी आर एग्जीक्यूटिंग इट ऑन अ लेटर डेट. तो वो आप उसके रिसाइटल में जो है वो जो ऊपर आप देते हैं ना कि दिस एग्रीमेंट इज मेड ऑन सच एंड सच डेट, वो वहां पे आप उसको क्लैरिटी दें. आगे चलेगा. नाउ ये जो है तीन चीजें जो है, attestation means signatures, registration. Certain agreements needs registration, and if they are not registered, they are not enforceable. So you have to be very careful about it. जैसे memorandum होगा, जैसे सेल डीड है, अगर सेल डीड आपकी जो है वो अगर नहीं है तो फिर आपको जो है वो आर्टिकल 5 में रहता है. सर आप एक बायर सेलर एग्रीमेंट करते हैं कि मैं आपको एक फलाना ब्रांड ऑफ सेल फोन बेचूंगा और 2 साल की ड्यूरेशन करते हैं,
लेकिन ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के दौरान वो ब्रांड ऑफ फोन इलीगल कंसिडर कर कहते हैं कि गवर्नमेंट लॉ पास करती है कि ये ब्रांड ऑफ सेल फोन आपने नहीं बेचने आप उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या हैसियत जाएगी? हाँ, सब्जेक्ट मैटेरियल नहीं इलीगल हो गया. yes. Generally in contract there is a clause, severability clause, और वो क्लियर ये करती है कि whether on the expiry or change in law that contract will survive or not. And normally what we say is that yes, if a certain portion of the law of the contract becomes illegal or the law changes, the remaining will keep on performing. जैसे डिफरेंट सोसाइटीज में बाद में कोई अगर आप किसी से कोई चीज खरीद लो और एग्रीमेंट कर लो, बाद में पता चले सोसाइटी के पास एनओसी नहीं है या इलीगल हो गया कंसीडर, तो दे स्टिल कीप ऑन वर्किंग. लाइक वो लैंड जो है इज दैट स्टिल लाइक योर्स और उसकी क्या वैल्यू होती है? बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा. और मैं सर ये सोसाइटी वाला काम जो है ना, ये बड़ा मुश्किल किस्म का काम है. नहीं, इशू इज दिस, वो एक तो मैंने ड्यू डिलिजेंस खुद करनी है सोसाइटी से लेते हुए कि वो सोसाइटी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वो रजिस्टर है कि नहीं है. देयर इज द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, ये पास ही है वहां जाके कि ये सोसाइटी से मैं देने जा रहा हूं वेदर दिस इज रजिस्टर्ड और नॉट. क्योंकि यस देयर आर लॉट ऑफ सोसाइटीज विच आर नॉट रजिस्टर्ड, और वो फिर प्रॉब्लम, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो देन यू कांट डू. अभी आप जो पिछला वो बता रहे थे, इज इट साउंड प्रैक्टिस कि आप रेट्रोस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट मार्च में किया लेकिन वो इफेक्टिव जो है वो बैक डेट में है, इज इट साउंड प्रैक्टिस? आपकी अगर देखिए ना, वो अभी हम ऑलरेडी बात यही कर रहे थे कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है पहले हो गई थी एंड यू आर रिड्यूसिंग इट टू एग्रीमेंट टुडे, यू कैन डू इट. Sir, what if we had a contract in 2006 and then we renewed that contract in 2008 and then we said that this certain clause is added and this will apply retrospectively since 2006. Is that justified or not? Yes, you can do it, but it depends. लेकिन आप वो कितनी जाएगी, जल्दी का आ गया, then registration and stamp duty, certain documents require that it be stamped. Stamp duty आप पे करें सरकार को कैसे चाहिए होते हैं, और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, those are available in the schedule 1 of the Stamp Act का जो आर्टिकल 5 का जो के तहत शेड्यूल है, बस ये ना देखिएगा कि उसमें आर्टिकल 5 में वो एंड पे शेड्यूल 1 है, उसमें वो एक्सप्लेन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं विच रिक्वायर्ड. लेकिन ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और ड्यूटीज जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ, इस्लामाबाद में भाई जावे सबसे कम है और मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ है, बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट. अब ये तो यार वो ये डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, लॉजिकल अरेंजमेंट आपकी होनी चाहिए और ये आगे चले आराम से. वो चीज मैंने देखनी है आखिर आ जाएगा, ये सारी चीजें कोई नहीं आगे चले आगे तो आगे थोड़ा सा कितनी रहनी चाहिए. पोस्ट पे आता हूँ, ड्राफ्टिंग ऑफ डीड पे शुरू किया और ये करिए बस यहाँ पे आ जाए. ये आपके वो रिसाइकल मैंने डाल दिया था इन रेड. अब उसमें आपने देखिए ये क्या है, नेम आपने किस तरह लिखना है, वो नॉर्मली उसको वो कैपिटल वर्ड में लिखा जाता है, अब वैसे भी लिखकर चल जाएगा लेकिन वो स्टाइल उसमें यही है. नेचर ऑफ द डीड जो है वो एक्सप्लेन होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल आप उसको बताएंगे ये सेल डीड है, पार्टनरशिप डीड है, वट एवर है, वो एट द टॉप पे आपने एक्सप्लेन कर देनी है. रिसाइकल पे जो आ गया है वो है दिस डीड ऑफ सेल इज मेड एट द टॉप, ये उसका जो है ओपनिंग पैराग्राफ जो है वो आपने, ये कोई तो मुश्किल नहीं है. आप जब वो मैं प्रैक्टिस में नहीं बेटा, वो आप ना भी आए तो आप नेट पे ढूंढो, हर एक का इसी किस्म से लिखा होता है आगे से. लेकिन रिसाइकल जो है, रिसाइकल में वेरी केयरफुल जो है ना, असल इशू जो है वो आपको रिसाइकल का है, वो मैं यहाँ पे आपके सामने पढ़ देता हूँ.
वो है कि आपने वो जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट डीड ओवर हियर, तो एक तो उसकी हिस्ट्री आपको पूरी उस रिसाइकल में डालनी है। ये पहले किसके पास थी, जिससे मैं ले रहा हूं उसके पास कैसे आई, ताकि उस प्रॉपर्टी के बारे में एम्बिग्विटी कहीं ना आए। एंड देन उसकी जो एक्सप्लेनेशन है कि वो उसके साउथ पे क्या है, ईस्ट पे क्या है, वेस्ट पे क्या है, नॉर्थ पे क्या है, साथ वाला पड़ोसी कौन है, सो ऑल दीज थिंग्स। अगर वो अर्बन है, रूरल है, तो वो तो दूसरा हो जाता है, उसमें उसका खसरा नंबर है, खाली खसरा नंबर से गुजारा नहीं चलेगा, उसमें वो उसका जो है ना खतौनी नंबर भी आपको चाहिए होगा, एवरीथिंग, तो उसको पूरा करना होगा आपने। अब ये जो है एक्सप्लेन कर रहा है कि ये एग्रीमेंट किसके लिए किया जा रहा है, जो टेस्टर आगे चले। व्हाट इज कोवेनेंट? कोवेनेंट वादा, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि आप क्या करने का। शेड्यूल दूसरा लगा देंगे आगे बचने आगे। वो गवर्निंग लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे चल ठीक है, चले आगे। अब तुम लोगों को ना जल्दी हो रही है उसकी केस की। थैंक यू। अच्छा, ये है सप्लीमेंट्री की, ये एक इशू आपको आएगा। आपका ऑलरेडी एग्रीमेंट है, मेरे ख्याल आपने 2 एग्रीमेंट है ना, आपने 2 ही है। तो दिस इज you have an agreement or deed already executed and you want to make certain changes in it. आपने उसका एडेंडम आप इशू करेंगे, और ये जरूरी नहीं है कि आप करें, बहुत तो गलती भी हो जाती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में बनाते हुए आपको गलती होगी और आप उसकी तस्दीक करना चाहते हैं, तो उस सूरत में भी जो यूजुअल फॉर्म ऑफ डीड है ना, जो पहले बनी हुई है, वही फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा, उसी तरीके से उसको बनाया जाएगा और फिर एक्सप्लेन कर दिया दिस इज इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट अर्लियर डॉक्यूमेंट। यस, नो नो नो, आप अगर नया करना चाहें यू कैन डू इट, फिर उस पर लिखना होगा कि दिस इज इन सुपरसेशन ऑफ अर्लियर वन एंड दैट अर्लियर वन जो है वो हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ना करना चाहें और आप सिर्फ छोटा सा उसका जो एडेंडम इशू करना चाहें, दैट यू कैन डू इट, और एक्सप्लेन आप उसमें ये कर देंगे कि दीज आर द थिंग्स which are no longer going to be the part of that earlier agreement, and whatever we are now renegotiating over here will form the part of that agreement. ठीक है, समझे ना? अब वो इसका स्टार्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ थोड़ा सा दिया, इन कंटिन्यूशन ऑफ द सेल डील executed on 8th day of August 2020 at Islamabad. This supplementary deal is executed on the 1st day of March 2023 at Islamabad between the parties agreement. आपने बता दिया उस डेट में जो एग्रीमेंट हुआ था, आज हम उसको आगे चलेंगे। अगली बात, जब आप क्लोज करेंगे तो एक क्लैरिटी देंगे at the end. What is that clarity? That this addendum is only to the extent of these things discussed over here. It is not overriding the all of the previous one. To the extent of the modification agreed in the supplementary deal, the original agreement dated 8th August 2020 stands modified. The other clauses of the said original agreement shall stand mutus mutandi and have full force and effect, bind and regulate the relation of the promoter and the allotee, and shall be subject to the same terms, covenant, stipulation, declaration, blah 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 blah. ठीक है, आगे चलो, मेरे ख्याल से सेंटेंस आने वाला है। सब इसको कर सकते हैं।
रुक जाना, काली साहब को बुलाओ। शेयर कैसे करूं? सर ग्रुप है बाल कौंसल वालों का ग्रुप है जो सर किसी को मेल कर देंगे सर, आप अपनी मेल से किसी को मेल कर दें आगे हैं? अपना तलाल, तुम्हारे पास इन सबका नंबर है? सर मेरे पास इनका नंबर, मैं कॉल हो जाऊंगा कि मुझे बाद में 8 साल पता है। Who can take the responsibility कि वो आगे पीछे करता है? एक को मैं भेज दूं। मुजाहिद साहब के हवाले करें, मुजाहिद साहब अच्छा। सुपरिटेंडेंट